Okay, so very good evening everyone. So I'm Dr. Kamal and I would be discussing your FMG recall for Physiology January 2025, right? Yes. So I hope आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया, right? And most of the things were from our. Very good evening everyone. So I'm Dr. Kamal. So remember, most of the questions here are from our DFX and the important topics. 2-3 questions were slightly confusing, है ना? So that benefit of doubt I can always give you, है ना? तो अगर total 15 questions आए हैं तो 14 to 15 है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो naturally confusing हो सकते हैं, ठीक है? But that should not be a deterrent या setback for you all, right? चलिए, so once again very good evening, है ना? जो भी live है they can correct me. ये questions we have taken from the students recall. So if there is any ambiguity, आपको लगता है कि इसकी बजाय कुछ और था, तो you can write down in the chat box, right? I will try to correct the question and then we will frame a final file, right? According to what you people tell me. चलिए, let's start with the first question. So in the jugular venous pulse pressure, the waveform, the A wave corresponds to, right? So I think it was a straightforward question and most of you should have got it correct. So A wave is due to increase in right atrial pressure, right? It is due to increase in right atrial pressure due to atrial systole, right? Due to atrial systole. That means it is due to increase in right atrial pressure due to atrial systole. So which is the right answer? Option number D, right? Tricuspid valve bulging into the right atrium. Yes, this is the C wave. Right atrial filling is, yes, this will be happening during isovolumetric relaxation, right? Venous filling, V wave, right? So the answer has to be none other than right atrial contraction, right? It has to be none other than right atrial contraction. Okay, let's move to question number 2. Identify the cell marked as X in the given image, right? Identify the cell marked as X in the given image. So if you could recall, same question we have given you in the FMG mock test and also in the CBT. So in the CBT I have given you a similar picture which was showing you these cells, these ones which are Purkinje cells, right? So ये जो cell है ये है Purkinje cells, right? These are Purkinje cells. And if I ask you Purkinje cells project to, right? So if I ask you Purkinje cells project to, right? Purkinje cells project to, किसको project करता है Purkinje cells? Yes. So that was a question I had given you in the CBT. Purkinje cells project to deep cerebellar nuclei, right? Deep cerebellar nuclei. That question we had done in the CBT. यहाँ पे they have asked you that these are which cells. They have not asked you कि किसको project करता है. So these are present in the, yes, the middle layer is Purkinje cell layer and these are none other than Purkinje cells. Deep cerebellar nuclei में which cells come? If I ask you, remember, don't eat greasy food, right? Dentate, emboliformis or emboliform, globose and vestigial, ठीक? So same question we had also discussed in the PYQ as well, right? So when we had done the NEET PG and the FMG PYQ discussion, उसमें exactly same question I had discussed with you. तो ये आप सबका correct होना चाहिए था, ठीक है? All of you should have got it correct. चलिए, moving on to question number 3. So basically when we say identify the cell marked as X, right? In this picture, what they had done is, इसको they had marked as X, right? This they had marked as X. Question 3. In a patient after giving noradrenaline injection, decrease in heart rate is observed. What is the most likely physiological mechanism responsible for the response, right? So remember, this some people were saying pharmacology का question है, ठीक? अगर pharmacology का question है तो भी doesn't matter, we can discuss. So when you give noradrenaline क्या करता है? Noradrenaline will cause your increase in blood pressure, ठीक?
So once there is increase in blood pressure, now you very well know कौन से receptors stimulate होंगे. We have the stimulation of blood pressure detecting receptors, right, which are known by the term baroreceptors. As soon as the baroreceptors, कौन सा main baroreceptor है? Yes, which was this one, carotid sinus. If it stretches more, ठीक है, इसका ज़्यादा स्टिमुलेशन हो रहा है इससे. अगर ये ज़्यादा स्टिमुलेशन होगा तो व्हाट इज़ द गोल? आई वांट टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर. ठीक है, आई वांट टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर. बताइए कैसे आई वुड लाइक टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर? हाउ विल आई डू सो? आई विल decrease the sympathetic nervous stimulation and I will increase the parasympathetic stimulation. ठीक, जैसे आप sympathetic nervous stimulation कम करेंगे और parasympathetic ज़्यादा, parasympathetic increase होने से what will happen? Heart rate will fall. ठीक, sympathetic कम होने से what is going to happen? 3 things. सबसे पहले heart rate again will reduce, stroke volume will reduce and there will be vasodilation. ठीक, vasodilation होगा तो what will happen to the resistance? Total peripheral resistance will reduce. ठीक है, so blood pressure will fall and it will come to normal. तो क्वेश्चन देखते हैं. नॉरएड्रेनालिन इंजेक्शन दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर पेशेंट का बढ़ गया, तो उसके बाद बेरोरिसेप्टर्स क्या करेंगे? दे विल बी स्टिमुलेटेड मोर. ठीक है, तो इनहिबिशन ऑफ बेरोरिसेप्टर कब होगा? इनहिबिशन होगा बेरोरिसेप्टर का जब इसका कम स्ट्रेचिंग हो रहा है. कम स्ट्रेचिंग कब होगा? जैसे पेशेंट को हेमरेज हो रहा है, ब्लड लॉस है, वॉमिटिंग, डायरिया, जब फ्लूइड वॉल्यूम कम है. ठीक, तो यहां पे आंसर वाज नॉट इनहिबिशन बट स्टिमुलेशन. ठीक है, तो एक बार दोबारा देखिए, आंसर यहाँ पे स्टिमुलेशन था. कुछ स्टूडेंट्स वर टेलिंग कि नहीं सर इनहिबिशन होगा. इनहिबिशन नहीं होगा बिकॉज बीपी बढ़ेगा तो ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी कैरोटिड साइनस की. ये क्या रिप्रेजेंटेशन है? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरोटिड साइनस. ठीक है, कैरोटिड साइनस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट इन एक्सचेंज फॉर chloride ions, right? In exchange for chloride ions in the RBC. ठीक, तो in exchange of chloride ions in RBC, bicarbonate is released. कौन सा इफेक्ट है? Yes, most of you should have got this question correct. We have discussed this in transport of carbon dioxide. है ना, ये RBC है, this is plasma, this is H2O plus CO2, it forms H2CO3, right? And H2CO3 will split into H plus and HCO3 minus. So this is H plus and HCO3 minus. This is a representation of RBC. Now you very well know HCO3 will go out, but in exchange another negative charge will come in. What is this known as? Chloride shift या हैमबर्गर फिनोमिना. ठीक है, तो इसका आंसर था क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना, राइट? अनदर टर्म फॉर द क्लोराइड शिफ्ट इज हैमबर्गर फिनोमिना, राइट? हैमबर्गर फिनोमिना. Hamburger is basically the name of the scientist who discovered this for us, right? Hamburger phenomena. Haldane effect क्या होता है? Can you recall? Haldane effect again we have studied in transport of carbon dioxide. Deoxyhemoglobin binds, yes, more carbon dioxide than oxyhemoglobin. Bohr's effect क्या है? Shift in oxygen hemoglobin dissociation curve due to changes in partial pressure of carbon dioxide and hydrogen ion. अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट राइट. अगर डिक्रीज होगा तो कर्व ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व विल शिफ्ट लेफ्ट. ठीक है, तो यहाँ पे एक ही आंसर करेक्ट है, दैट इज क्लोराइड शिफ्ट. दिस ऑल ऑफ यू शुड हैव गॉट करेक्ट. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. दिए अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सबका सही होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉज अ राइटवर्ड शिफ्ट in the oxygen hemoglobin dissociation curve, right? Right shift. So remember, this is the y-axis, this is the x-axis, this is the oxygen hemoglobin saturation in percentage,
right? This is the arterial O2 in millimeter mercury. And this we have done in the class. Normal shape is sigmoid, ये normal curve है. Now they have asked you that which factor will cause the shift of curve to right, to right. That means when will the curve shift like this to the right? So what is the answer? Less 2,3 DPG causes left shift. Acidosis is the answer because right shift occurs with increase in partial pressure of carbon dioxide, right? Increase in hydrogen ion, increase in PCO2, increase in hydrogen ion, increase in lactates, and increase in 2,3 DPG, right? Diphosphoglycerate, product of glycolysis, right? So only correct answer is acidosis. ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो द कर्व विल शिफ्ट राइट, है ना. तो यहाँ पे हाइपोकार्बिया डिक्रीज इन PCO2 में कर्व विल शिफ्ट लेफ्ट. ठीक, डिक्रीज इन टेम्परेचर में अगेन कर्व विल शिफ्ट लेफ्ट. तो करेक्ट आंसर इज ओनली एसिडोसिस. ठीक, ओनली एसिडोसिस. चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. So 50-year-old patient presents with respiratory difficulty. Again, you can take this as a medicine question, you can take this as a physiology question, but you should have done it correct. Chronic smoking की history है for last 30 years. Pulmonary function test is showing a decrease in FEV1 percentage. FEV1 percentage we all understand happens in the FEV1 upon FVC ratio is decreased, right? This occurs in obstructive lung disorder. Right, obstructive lung disorder. यहाँ पे only one is obstructive, that is COPD, right? Chronic obstructive pulmonary disease. ठीक, this also correct for everyone. सबका सही होना चाहिए था. ठीक, this is a straightforward question. Pulmonary fibrosis, interstitial lung disease are all restrictive lung disorders. Which of the following changes occurs during muscle contraction while exercising? Remember, same question I had shown you in the picture in the DFX in the workbook, और same picture I have given you where I have shown you a sarcomere, और मैंने बार बार आपको बोला था only one thing remains same, that is A band. A band decrease नहीं होता है, A band stays the same. A band stays the same, right? So A band will decrease. Which of the following changes occur during muscle contraction? सही है ये? No, this is wrong. A band stays the same. M line, यहाँ पे देखिए फिगर, muscle is relaxed. ये है आपका I. ठीक, this is the I band. In the middle we have the Z line. ये Z line है. This darker one is the A band. A के middle में we have the H, and in the middle of H this is the M line. ठीक, so just see again, whenever muscle is contracting A band stays the same. Remember, M line will become prominent. M line prominent हो जाएगा. यहाँ पे if you see M line is faded, you can't appreciate it much. ठीक, नेक्स्ट फिगर में देखिए, यू कैन सी दी एम लाइन मच बेटर. सो एम लाइन तो डिक्रीज नहीं होगा, एम लाइन रादर उसके लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, एम लाइन बिकम्स प्रोमिनेंट. राइट, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल डिक्रीज. ठीक, ए बैंड डिक्रीज नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्सो रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. ओनली करेक्ट आंसर इज आई बैंड डिक्रीजेस. रिमेंबर, ये दो जेड लाइंस हैं, ये ऐसे आसपास मूव करेगा तो आई बैंड इज स्लाइडिंग इनटू द एच जोन, है ना. सो एच जोन डिसअपियर हो जाता है और एम लाइन बिकम्स प्रोमिनेंट. ठीक, अगेन ऑलरेडी डन क्वेश्चन इन बोथ DFX एंड अवर क्लास नोट्स. सो 100% करेक्ट फॉर एवरीवन. सबका सही होना चाहिए था. ठीक है, वी हैव डन इट ट्वाइस. DFX में भी रिवाइज करवाया था आपको, क्लास में भी किया हुआ है. अगेन अनदर वन, ये भी मैंने क्लास में आपको 2-3 बार बताया था कि बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है. इट इनहिबिट्स द एसिटाइल कोलिन रिलीज. ठीक है, अब इसमें दे कुड हैव आस्क्ड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन कि कौन से प्रोटीन्स को इनहिबिट करता है, बट दे हैव नॉट आस्क्ड यू. रिमेंबर, कहाँ पे पढ़ा है हमने DFX में एंड इन स्पेशली अवर क्लास नोट्स. बोटुलिनम टॉक्सिन इनहिबिट्स, यस, विच प्रोटीन्स. अगर इतना याद था, योर क्वेश्चन विल ऑलवेज बी करेक्ट. स्नेयर प्रोटीन्स इट इनहिबिट्स, राइट,
and inhibits snare proteins V snare, synaptobravin, T snare, syntaxin and SNAP25. तीनों को inhibit करता है and it inhibits the acetylcholine release from presynaptic terminal. ठीक, और मैंने आपको दूसरा भी बताया था, tetanus toxin only inhibits synaptobravin, but उसका action है it decreases the release of GABA and glycine in CNS, है ना, जिसका action रहता है कहाँ पे, neuromuscular junction, right? So another question directly from our workbook. Till now I cannot see any question which is a new one which we have not done in class, right? So everything is from the notes. ADH acts on which of the following site of nephron? ठीक है, इसमें एम्बिग्विटी था, कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि नहीं यही क्वेश्चन था, ADH कहाँ पे एक्ट करता है. इफ दिस वाज द क्वेश्चन देन द आंसर इज नन अदर देन कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, cortical collecting duct, cortical collecting duct. This is the site of action of ADH, right? Site of action of the action of ADH, right? ADH. Moving to the 10th one, yes, this is an interesting question. यहाँ पे ambiguity है and there is difference of opinion of students. So if somebody is live, they can help me out कि exactly क्या पूछा था अभी तक. अगर you can recall, renal biopsy image दिया हुआ है, identify the cells marked in histological section, right? अब देखिए ये जो basically representation है, ये आपका glomerulus है. ठीक है, this is the representation of the glomerulus. ऐसे अगर यहाँ पे देखूं मैं तो ये is a representation of my glomerulus, right? This is the representation of my glomerulus. Let me redraw. This is the representation of the glomerulus. ये basically figure, this I would say is a slightly difficult one because if you are not able to recap, ये जो concept है, this is a concept of juxtaglomerular apparatus, है ना. juxtaglomerular apparatus होता है where the afferent arteriole comes near early part of distal convoluted tubule. तो अगर ये juxtaglomerular apparatus, this is the picture of glomerulus, then remember we have an arteriole which is going to bring the blood in, है ना, like this. This is the afferent arteriole. This is the one which is carrying the blood like this, efferent arteriole. So if they had pointed the arrow over here, अगर यहाँ पे arrow लगा हुआ था, so these are my extra glomerular mesangial cells. Extra मतलब glomerulus के बाहर, extra glomerular mesangial cells, right? So if I remove this now, just erase this off, then if you see carefully, glomerulus के बाहर है extra glomerular mesangial cells, right? extra glomerular mesangial cells. There is one more popular name of the same which I have told you, Lace's cells, right? but option जो दिया हुआ था that was extra glomerular mesangial cell. ठीक है, अगर यहाँ पे arrow लगा है ये green पे, तो आंसर हो जाएगा extra glomerular mesangial cell. तो अगर ग्रीन वाला ये था तो आंसर होगा C. But some students are saying that they had asked rather what is this. They have made the arrow over here. ठीक, अब अगर यहाँ पे arrow है, remember this part of the tubule is in front of the afferent arteriole, right? And this is none other than representation of DCT. और distal convoluted tubule में we have the cells known as macula densa, right? macula densa. तो आंसर चेंज हो जाएगा. तो now you will have to think about it. If there was the arrow on this one, answer is Lace's cells or extraglomerular, glomerulus के बाहर. But if the option arrow is over here, then it will become macula densa, right? So try to recap, right? कि अगर याद कर सकते हैं, wonderful. Otherwise, this I would say is slightly difficult for most of us, right? Slightly difficult. Moving on to question number 11. Dehydration is more severe in infants compared to adults.
why? Remember, whenever I start teaching body fluids, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मेल्स में टोटल बॉडी वाटर है 60%, है ना, एंड आई साइमल्टेनियसली टेल यू फीमेल्स में टोटल बॉडी वाटर है कम 50%, and then in the last I tell you that infants have more total body water which is 70%, है ना. तो इन्फेंट्स में टोटल बॉडी वाटर का परसेंटेज ज़्यादा है, बट प्लीज रिमेंबर दिस इज परसेंटेज. थर्ड ऑप्शन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मार्क किया है, वो गलत है, बिकॉज ये टोटल बॉडी वाटर लिखा हुआ है, टोटल बॉडी वाटर का परसेंटेज नहीं है. ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि दोबारा से देखिए, अगर इफ आई एम एन एडल्ट and let's say I am male, my weight is 70 kg, right? Then my total body water will be 60% of 70 kg, जो हो जाएगा 42 liters, right? Infant अगर है, उसका weight है let's say 4 kg, right? 4 kg, just a random value. तो 4 kg का 70% will be only 2.8 लीटर. मतलब परसेंटेज तो ज़्यादा है 60 से, बट टोटल बॉडी वाटर का वॉल्यूम बहुत कम है इन कंपैरिजन टू मेल्स एंड फीमेल्स या एडल्ट्स. ठीक, तो ये ऑप्शन सी इज रॉन्ग. नाउ इफ यू लुक एट दिस पिक्चर विच आई हैव शोन यू ऑन द राइट साइड, रिमेंबर इन्फेंट्स में हम पढ़ते हैं इवन इन पीडियाट्रिक्स दैट इन्फेंट्स आर मोर ससेप्टेबल टू डिहाइड्रेशन बिकॉज दे हैव मोर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड ऑल्सो दे हैव मोर सर्फेस एरिया. ठीक, तो यहाँ पे आंसर इज कि ECF इज मोर देन ICF. और इस टेबल में अगर आप देखेंगे ध्यान से, जस्ट फोकस ओवर हेयर इन दिस चार्ट, दिस इज द इंट्रा यूट्राइन लाइफ एंड देन दे हैव शोन 0. 0 मीन्स एट बर्थ, right? So from birth to almost 1 year, what I am seeing is that the ECF volume in the intrauterine life is more, and almost till nearly 3 to 4 months it remains high. Then the ECF volume starts reducing, ICF starts increasing. So adult में ICF is more, and initially in the intrauterine life and after birth for 3 to 4 months the ECF volume is more. ठीक, so ECF is more than ICF. This was the answer. Moving to question 12, hypertensive patients lab results reveals hypernatremia, hypokalemia and metabolic alkalosis. All of you should have got this correct. What is the most probable diagnosis? ठीक, तो देखिए वेरी सिंपल थिंग, एडिसन हो सकता है? नहीं, एडिसन इज hypoaldosteronism. If aldosterone is less, I will always have decrease in sodium, but I am given hypernatremia, absolutely wrong. ठीक, बार्टर और जेटलमैन में, बार्टर इफ यू कुड रिकॉल, राइट, बार्टर किसका म्यूटेशन है? बार्टर इज द म्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन NKCC, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर. जेटलमैन किसका म्यूटेशन है? जेटलमैन इज द म्यूटेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर म्यूटेशन. ठीक, if I am not able to reabsorb sodium and potassium, तो naturally barter में I will have decrease in sodium and decrease in potassium. मतलब hyponatremia और hypokalemia. यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन है hypernatremia with hypokalemia. ठीक, so hypokalemia होगा, but again I will have hyponatremia. सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, आई विल हैव डिक्रीज इन सोडियम, राइट, एंड अगेन डिक्रीज इन क्लोराइड. यहाँ पे डिक्रीज इन सोडियम, डिक्रीज इन पोटेशियम, डिक्रीज इन क्लोराइड. सो द ओनली करेक्ट आंसर इज कॉन सिंड्रोम, विच इज हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म. हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में आई विल हैव हाइपरनेट्रीमिया, आई विल डू more secretion of potassium, so I will have hypokalemia, and I will have decreased hydrogen ion because more hydrogen ion secretion, so I will have hypokalemic alkalosis, right? So the correct answer is none other than Conn syndrome. This all of you should have got correct.
अमान खान, अगर इट वॉज इंक्रीज इन बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक तो भी मीन ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना, नॉरएपिनेफ्रिन देने के बाद। हैमबर्गर फिनोमिना था तो हैमबर्गर आंसर है ना। क्लोराइड शिफ्ट नहीं था तो हैमबर्गर आंसर होगा मनीष, ठीक है। एंड समीर ठाकुर, अगेन हैमबर्गर आंसर है। एक्स्ट्रा ग्लोमुलर एरिया मार्क था ग्रीन वाला तो लैसेस सेल आंसर है, एक्स्ट्रा ग्लोमुलर मेसेंजियल सेल, ठीक है। यस, अगला क्वेश्चन देखिए, अब बताइए क्या आंसर होना चाहिए नेक्स्ट में। हाँ, during spermatogenesis, which of the following hormone inhibits FSH secretion? हाँ मान खान, आप सही कह रहे हैं, वही आंसर है। फिर ग्रीन वाला मार्क था तो एक्स्ट्रा ग्लोमुलर मेसेंजियल सेल है, बिल्कुल बिल्कुल। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इनहिबिट्स FSH secretion? यस, जस्ट अ सेकेंड, अभी देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, जस्ट अ मिनट। ये सर, ये बंद हो गया है फीड नहीं फीड बंद हो गया है, मैं तो देख नहीं पा रहा कुछ यूट्यूब पे। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। So coming to the next question, during spermatogenesis, which of the following hormones inhibits the follicle stimulating hormone secretion? ठीक, so over here if you could recall, ये है आपका gonadotrophin releasing hormone, right? Then we have the release of LH and FSH, है ना। LH acts on L for LH, L for Leydig cells. FSH acts on Sertoli cells. Leydig cells release testosterone. Sertoli cells release inhibin. ठीक, now question is which of the following inhibits the FSH? Remember, inhibin inhibits the FSH, right? So answer is inhibin, none other than inhibin. यस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी, है ना। ऑल ऑफ यू शुड हैव गॉट इट करेक्ट, इसमें आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट, है ना, ये सबका सही है। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन द गिवन रिफ्लेक्स? कौन सा हार्मोन इज इन्वॉल्व इन द गिवन रिफ्लेक्स, है ना। सो बेबी इज सकलिंग द ब्रेस्ट, यू नो दिस इज द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। ओनली करेक्ट पॉसिबल आंसर इज ऑक्सीटोसिन, मिल्क ejection reflex, है ना, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। रिमेंबर आई हैड टोल्ड यू कि लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था एग्जाम में आपके, लास्ट टू लास्ट ईयर जनवरी क्वेश्चन वाज, है ना, इन सॉरी 24 जनवरी क्वेश्चन वाज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्शन ऑफ
प्रोलैक्टिन, वहां पे ऑप्शंस था मेमोजेनेसिस मतलब ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, लैक्टोजेनेसिस मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, गैलेक्टोपोइसिस मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। तो गैलेक्टोकाइनेसिस जो लास्ट टाइम जनवरी में पूछा था 24 में, दिस टाइम अगेन दे हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आया था एंड दिस टाइम इट इज मच सिंपलर कि ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। Moving to the last one, patient had difficulty in switching from one movement to another with uncontrollable hand movements. Remember, if I'm not able to do rapid alternating movements, क्या बोलते हैं इसे, pronation supination, ठीक है, this is a characteristic feature of cerebellar dysfunction, है ना, this is a characteristic problem of cerebellar dysfunction. किसमें क्या, व्हाट इज दिस नोन एज, यस, ए डायोडोकोकाइनेसिया या डिसडायोडोकोकाइनेसिया, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लाइक ऑलवेज यू ऑल हैव माय डायरेक्ट फोन नंबर, यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर। कोई भी आपको इशू हो, कोई और क्वेश्चन याद आए तो मुझे व्हाट्सएप करिए, ठीक है, जस्ट व्हाट्सएप मी द क्वेश्चन, आई विल गेट बैक टू यू विद द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट, होपफुली ऑल ऑफ यू हैव डन एक्सीडिंगली वेल। अगर दोबारा देखें, देखिए 15 सही होना चाहिए सबका, 14 शुड बी करेक्ट, 13 शुड बी करेक्ट, 12 शुड बी करेक्ट, 11 में आई कैन गिव यू सम डाउट कि मे बी एग्जाम स्ट्रेस में यू माइट नॉट हैव डन इट करेक्ट। तो 15 में से अभी तक 5 डिस्कस करें, 5 में से एक गलत हो सकता है, ठीक है, बट 4 ठीक होना चाहिए। 10 में आई कैन ऑल्सो गिव यू डाउट कि नहीं आपका मे बी इट कुड हैव गॉन रॉन्ग, ठीक। सो 2 गलत हो गए अभी तक, बाकी ठीक है। 9 everyone should get it correct, 8 भी सबका सही होना चाहिए, 7 भी, 6 भी, 5 भी, 4 also, 3 में अगेन आई कैन गिव यू सम डाउट अगर क्वेश्चन एग्जैक्टली ढंग से याद नहीं है। अगर दोनों सिस्टोलिक डायस्टोलिक इंक्रीज था तब भी मीन ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, एज सम ऑफ यू आर टेलिंग कि सिस्टोलिक इंक्रीज दिया हुआ था, डायस्टोलिक इंक्रीज दिया हुआ था, तब भी मीन ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, which is the stimulus for baroreceptor. Answer will remain same, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन में डाउट हो गया, ये हमने किया हुआ है, सीबीटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 and 1 इज अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो 15 में से 12 का मतलब, इफ आई एम गिव यू सम डाउट 80%, right, most of you should have got correct. I can give you doubt for 1 more, then also 10 to 11 correct. 70 to 80% is very good performance, right, in the exam, ठीक। So don't worry, have faith in God and your result would be excellent, and meet us after the, right, after the results, right. So once again, thank you so much for patient listening, and I certainly wish that all of you will succeed, and I will see you on the other side, right. Thank you so much once again, ठीक है। और कोई क्वेश्चन याद आए तो प्लीज सेंड मी दी व्हाट्सएप ऑन माई नंबर, राइट, यू हैव माई नंबर, सेंड मी दी व्हाट्सएप। चलिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।